Water is the most precious gift of nature. It is crucial for the survival of all living organisms on this earth. Industrialization, economic growth, and modern technology are highly dependent on water. When environmental balance is disturbed, pollution begins to take place. Water pollution occurs when the water becomes overloaded with too much of one thing and the aquatic organisms cannot keep up with their cleaning responsibilities. Water contamination is a very serious national problem because water pollution is causing tremendous amount of health problem, essentially waterborne diseases which affect lakhs and lakhs of our people. The highest number of deaths occur in diarrheas in small children in the first few years of their life. And not only children, even adults are affected by so many waterborne diseases. Like you have dysentery, where there is bleeding and severe abdominal pain. There is a viral hepatitis, hepatitis A and hepatitis E. There is cholera, typhoid. These waterborne diseases affect practically all systems of the body. According to the World Health Organization report, every year 3.5 billion people die from waterborne diseases. Most of them are children. Water contamination is a major environmental issue in India. Delhi is the capital of India. Yamuna River is the only source to fulfill the water requirement of the city. Due to the growing population, the city requires 3.3 million liters of water every day. But the groundwater has become scarce. यमुना पहले इतना पॉपुलेशन का लोड नहीं था, एक नदी की तरीके से थी। पर आज अगर आप आके देखते हैं, बहुत से लोग आके यहाँ देखते हैं तो उनको ये यकीन नहीं होता कि ये यमुना नदी है। लोगों को ये लगता है कि ये नाला है और हम कहीं और लाके उनको खड़ा कर दिया है। स्कूल में ऐसे लिखा जाता तो यही कहा जाता ना कि भाई नदी है, साफ़ पानी है, उसका एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के अंदर मछलियाँ हैं और कछुए हैं, सारी चीज़ें हैं। आज की तारीख में अगर आप आज देखते हैं यमुना नदी को तो उसके अंदर सिर्फ काला पानी है, जीव जंतु के दूर दूर तक अता पता नहीं है। जैसे सुना ही होगा कि पानी अगर ख़त्म हो जाएगा तो सबसे पहले तो ये कि आपको पानी इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलेगा। दिल्ली जिसकी पॉपुलेशन घट नहीं रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 2020 तक ग्राउंड वाटर दिल्ली का ख़त्म हो जाएगा। तो आप पानी की निर्भरता आपकी किस पे है? यमुना नदी पे है। Rivers are sacred in India, so every day tons of temple wastage like plaster of Paris, statues with harmful chemical colors and plastic are dumped into the river. The other reason is industrial contamination or industrial pollutants from the industry, where all the waste is discharged into the rivers or into the other water bodies. These are unacceptable levels of pollutions. So these cause in turn the various waterborne diseases. Now, for example, heavy metals like say lead, arsenic, these contaminate the water. The lead poisoning causes anemia. In children, it will cause brain damage, memory loss. The children don't grow, and it affects various parts of the body.
Indian rivers have become carriers of untreated industrial wastage. आज के डेट में अगर यहाँ पे आपको घुसना है तो शायद आपको मास्क की ज़रूरत पड़ जाएगी। या अगर मैं बात करते करते अब हाफ रहा हूँ तो वही रीज़न है कि काम करके नहीं हाफ रहा हूँ। तो पॉल्यूशन और जो गंदगी की स्मेल है उसकी वजह से जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है वो सबसे ज़्यादा है और वो सबसे ख़तरनाक है आज के डेट में। Due to heavy contamination, oxygen level is zero. As a result, no animal life can survive. The human life on the river continues. हमने जो गंदगी मचाई है सर वही साफ कर रहा हूँ। सर हम ही करते हैं। हम का मतलब हर एक जन जो इंसान ओपनली लिटर करता है, कहीं पे भी कचरा कहाँ पे भी जब भी मन में मर्जी आए फेंक देता है, तो वो कचरा तो उठाना हमारी जिम्मेदारी है। कितना गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, कितना दूसरे लोगों को ब्लेम करेंगे। ये ब्लेम करते करते जब धरती नहीं रह जाएगी तो वो याद आएगा कि आज कल उसको ब्लेम किया था, परसों उसको ब्लेम किया था। When rivers are getting contaminated, so is the groundwater. When we use this groundwater through bore wells, the contaminated water reaches our homes, which is consumed by us. Now, apart from drinking water, the pollutants in water, by washing your face with this contaminated water, the trachoma virus enters the eye and the eye gets damaged. A lot of cases are there which end up in blindness because of this trachoma virus. Also, by washing, you get so many skin diseases like fungal diseases, scabies again. So, these are all conditions which are aggravated by this contaminated water. पानी इतना ख़राब आने लगा से पी नहीं पाते हैं हम लोग, और पानी निकाल के रख देते हैं तो थोड़ी देर में पीले पड़ जाते हैं। पीने से बहुत दिक्कत आती थी, बीमारी बनता था, बुखार और अनहजम नहीं, जैसे खाना खाते वो हजम नहीं होता था। सरकारी पानी आने लगा जब हम लोग पीते हैं तो पानी पीते हैं जब वो सही है, दूर से लाना पड़ रहा है, पानी ढो के लाना पड़ता है। In case the fluoride content of the water is unacceptably high, what would happen is that fluoride gets absorbed in the body and the patient may get fluorosis, what is called fluorosis. Now, this fluorosis essentially affects the teeth and the bone, particularly in children. Excess fluoride, it damages the teeth, causes pits, holes in the teeth, also discolors the teeth. Even the bones get deformed. Leg bones would get completely crooked. They will not be able to stand, they can't walk. Even the older people, the spine completely gets deformed. Lead, of course, not only comes from the industrial pollutants, even from petrol, diesel, these fuels, they also contribute in increasing the lead content of the water. About 75% of our body weight is made up of liquid. Clean water is necessary for healthy life. It's not only industrial pollutants, it is also agricultural pollutants, the various chemicals, pesticides which are used by the farmers. They enter the ground, they enter the soil and affect the groundwater. जो छोटा कचरा है वो आपको आँखों से नहीं दिखेगा, बड़ी चीज़ तो आपको दिख रही है, पॉलीथीन उसके अंदर जा रहा है, कूड़ा जा रहा है, कुछ चीज़ें और डाली जा रही हैं,
पर जो इस तरह का है, जो सीवर का पानी आ रहा है, सीवर का पानी जो आ रहा है नदी के अंदर, उसको रोकने के लिए भी आपने देखा होगा इधर काफ़ी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं। नमामि गंगे जो है भारत सरकार जो है उसने कई फंड्स अप्रूव करके दिल्ली सरकार को दिए हैं, जिसके अंतर्गत ये STPs लगाए जा रहे हैं। Through sewage treatment plants, contaminated water goes through several steps of cleaning. The Government of India has taken the initiative under the Swachh Bharat program, which also aims at hygiene and sanitation in our society. हमें जितना हो सके एक साथ जुड़ना है या हमें सफाई में सहयोग करना है। हम अपने घरों में जो भी कूड़ा करते हैं वहाँ से शुरुआत करनी है। जितना हम कर सके कंपोस्टिंग अपने घर में छोटे से मटके से भी शुरुआत किया जा सकता है। जो भी आपका किचन वेस्ट है आप उसको कंपोस्टिंग करना शुरू करो। प्लास्टिक जितना कम हो सके यूज़ करो। अपने घर से शुरुआत करेंगे तो वो धीरे धीरे करके हमको यहाँ पे भी परिवर्तन दिखाई देना शुरू करेगा। Now, this is not a very difficult job. In most cases, merely boiling the water helps you to make the water free from contaminants. तो सबसे बड़ी चीज़ यही कि अगर आपको अपना कल चाहिए तो आज आपको अपनी नदी को बचा के और संभाल के रखना पड़ेगा। For a new beginning, we have to understand and change our thinking about the real value of water. Now, the time has alarmed us. Let's save every single drop of water to save the earth, because life without water is impossible.